हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। क्रिसमस इज़ जस्ट अराउंड द कॉर्नर और आज मैं आप सबके लिए एक ऐसी क्रिसमस एक्टिविटी लाई हूँ जो ना सिर्फ बच्चे कर सकते हैं बल्कि बड़ों को भी इक्वली मज़ा आएगा। सो चलिए देखते हैं। सो दिस इज़ अ क्रिसमस पज़ल एंड इट ऑल्सो कम्स विद अ स्टोरी बुक। पज़ल बहुत ही सुंदर और क्रिसमस थीम पे है तो इसको बनाने में बहुत मज़ा आता है। एंड सिंस इट हैज़ 80 पीसेस तो बच्चों के लिए बहुत मुश्किल और अडल्ट के लिए बहुत आसान नहीं होता है, तो बड़े और बच्चे दोनों ही इसको एंजॉय कर सकते हैं। सो चलिए देखते हैं बॉक्स के अंदर क्या है। ये है हमारी स्टोरी बुक। इट्स अ क्रिसमस स्टोरी। इट्स अ स्टोरी अबाउट द नाइट बिफोर द क्रिसमस और क्रिसमस ईव एंड वो लोग क्या क्या करते हैं ये सब कुछ इसमें कैप्चर किया गया है। इसके साथ ही इसमें आता है एक पज़ल पिक्चर जिसको रेफ़र करके आप पज़ल बनाते हैं। It's a beautiful puzzle. It has snowman, Santa, Christmas trees, reindeers and whatnot. Next आता है हमारा 80 pieces puzzle. So I'm very excited to solve it. So let's start. So I've made 6 piles here. Each pile corresponds to some element in the puzzle. For example, this pile corresponds to the Christmas tree. The second pile has the reindeer related pieces. The third pile has a smaller Christmas tree. Then we have one pile for snowman and another pile for Santa circle, and the last pile contains all the remaining pieces. So I'm starting from the bottom right. So I'll try constructing the smaller Christmas tree first. As I said earlier, it's not that easy. So kids will need your help. एंड आपको बच्चों के साथ ये बनाने में बहुत मज़ा आएगा। एक तो ये क्रिसमस थीम पे है और इतना कलरफुल है और इतने सारे पीसेस हैं कि इसको जोड़ने में एक्चुअली बहुत मज़ा आ रहा है। दिसंबर इज़ माई फेवरेट टाइम ऑफ द ईयर वाइंड अप हो रहा होता है, क्रिसमस होता है, इतने सारे फेयर्स होते हैं, मॉल्स इतने ज़्यादा डेकोरेटेड होते हैं, नया साल स्टार्ट होने का एक्साइटमेंट होता है और ओवरऑल वाइब इतनी अमेजिंग होती है। यू फील लाइक जस्ट वेरी क्रिसमसी। Do you also feel the same? Do let me know your comments in the comment box below. And I think हमारा Christmas tree almost complete हो गया है. I think we are missing some pieces, so I'll try finding that in the last pile where I had all the remaining pieces. I found penguin. और कोई नहीं मिल रहा है तो आई एम मूविंग ऑन टू द स्नोमैन नाउ। So I have not increased the speed of this video, but if you feel it's too slow, please feel free to increase the speed, but I would recommend you not to do so because it's quite nice and definitely don't skip the end. So ये हो गया हमारा स्नोमैन रेडी और इसके साथ 2 पेंगुइन्स हैं। I'll try to find the other one. Oh, it has elves also. और अब मैं ले आई हूँ अपना लास्ट पाइल। इसमें से पीसेस लगा के वी कैन मेक द स्काई लाइन, दैट विल बी गुड। लेट्स ट्राई दैट।
और कोई पीसेस नहीं मिल रहे हैं तो अब मैं ले आई हूँ अपना थर्ड पाइल विच इज़ द रेनडियर पाइल। तो अभी हम रेनडियर बनाएंगे। सो आई एम ट्राइंग टू फाइंड द फेसेस ऑफ ऑल द 4 रेनडियर्स। पहले उनको अलाइन करके देन आई विल ट्राई टू फाइंड देयर एंटलर्स एंड द फीट। रेनडियर के पायल से मिसिंग स्नोमैन का पीस मिल गया तो हमारा स्नोमैन पूरा हो गया। Solving puzzles is such a fun activity. I don't even remember last time मैंने कब कोई puzzle solve किया था. I should do it more often. अब हम बनाएंगे अपना सेंटा सर्कल। तो इसको मैं अलग से बना के उसके बाद उसको पीसेस को वहाँ पे शिफ्ट कर दूँगी। और अब हम आ गए अपने लास्ट पाइल में जिसमें बड़े वाला क्रिसमस ट्री है, तो वील ट्राई मेकिंग दैट। The last piece. So, what do you think? Let me know your thoughts in the comment box and I'll see you next time. In the meantime, if you want to try this activity, I'll leave the product link in the description box below and I'll see you next time. Until then, bye.